Okay, so in the while doing duct drafting, we need to consider, okay, we need to consider many factors. The first is, suppose this is machine, this is machine, from machine from machine to first branch. The from machine to the first branch, clearance should be minimum 18 inch. Okay, next. So this is shoe collar basically. If branch duct CFM is less than or equal to 1500, then we use shoe collar. Then we use shoe collar. So the angle of this should be
45 degree on the length. This should be 4 inch or 6 inch. 4 inch or 6 inch. Okay. Assume this as width into height. Width into height. This as width 1 into height 1. Okay. This is as width into height. This is width 1 into height 1. So now when you want to turn around 90 degrees of a duct, then this is elbow. This is elbow. So when we use elbow, when you want to turn 90 degrees. Okay. So assume width dash, height dash. Assume this as R dash, R double dash. Therefore, R dash equals to width dash by 2. R dash equals to width dash by 2. So this value should be minimum 6 inch on it. R double dash equals to width dash plus R dash. Okay, now this is width 1 into height 1. This is width 1 into height 1. Therefore, and this is reducer. So whenever we are going to use, so we use reducer. Whenever you want to connect two different sizes of the ducts, हमें reducer use करते हैं. ठीक है, reducer LR, the length of reducer. Okay, LR equals to width minus width 1 divided by width minus width 1 divided by 2 into 5. This is also minimum 12. So this formula is for one side taper. This is two side taper, sir. One side taper means it will be like this here. See, this is one side taper. सर वो मिनिमम 12 क्या है? 12 inch. Suppose if the value is coming less than 12, okay, then हमें 12 inch लेना पड़ेगा. Got it? Yes, I got it. No.
दिस सर इज बीच में सवाल पूछ सकते हैं या फिर कंप्लीट होने के बाद? कंप्लीट होने के बाद आप पूछो तब तक। ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लीजिए सर। तो हाइट 3, okay, width 3 into height 3. Now this fitting is called as trouser joint or Y joint we say. ओके, सो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें? R1, R2, D1, D2, LR1, LR2. Okay, so let's say some x equals to width 1 divided by width 2 plus width 3. Therefore, D1 equals to x into width 1, D2 equals to x into not width 1, width 2, width 3. Both should be in even numbers. Always width 2 plus sorry D1 plus D2 should equals to width 1. R1 equals to D1 by 2, minimum 6 inch. R2 equals to D1 plus R1. LR1 equals to D2 minus width 2 D1 minus width 2 by 2 into 5, minimum 6 inch. LR1 equals to LR2 equals to D2 minus width 3 by 2 into 5, minimum 12 inch. Got it? So these are the formulas which we need to remember throughout the HVAC career. So make a note, please make a note of this formulas. Yes, आपका क्वेश्चन क्या है पूछ सकता है? सर इसमें शो कॉलर अगर नहीं देते हैं 1500 से नीचे तो क्या उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है?
प्रॉब्लम मीन्स इसमें प्रॉब्लम का नहीं है, दिस इज ओनली वी आर गिविंग, आप उसका प्लेस पे दूसरा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम का स्मूथ फ्लो के लिए हमें करता है ये चीज। स्मूथ फ्लो के लिए या अगर मान लिया कि हमको वो अगर शो कॉलर नहीं लगा, सीधा मैंने डक्ट कनेक्ट कर दिया, तो उससे मतलब ठीक रहेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा सीधा, सपोज आप सुनो एक बार, आप इधर ऐसा सीधा कनेक्ट कर दिया, जी। तब यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी स्लोप टू गेट द एयर इन, राइट? हम्म। ऐसा स्लोप दिया तो क्या होगा, कुछ एयर ऐसा जा सकता है, इजी होगा। तो उसमें सीएफएम में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं 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 होगा, क्योंकि सपोज इधर 5000 CF 500 CFM चाहिए, हाँ। उसका हिसाब से ही मेरा VCD इधर आएगा। वो VCD क्या करता है, वो सिर्फ 500 CFM का ही लेके जाएगा। अच्छा अच्छा, ये मशीन टू जो फर्स्ट ब्रांच आप दे रहे हैं 18 इंच पे, अगर इसके अंदर हम लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा? इधर और फिटिंग्स आता है ना, इधर एक VCD आना है, हाँ ओके, फिर फ्लेक्सिबल बेलो, फ्लेक्सिबल कैनवास आना है, हाँ, फ्लेक्सिबल तो 6 इंच तो रहता है ना सर वो? या और इधर कुछ कभी कभी साउंड अटेन्यूएटर्स, अकॉस्टिक इंसुलेशन आता है। सो वो हाँ हाँ। फिटिंग्स पूरा फिट करने के लिए मिनिमम 18 होना जरूरी है। अच्छा अच्छा सर, इसमें जो 18 इंच आप ले रहे हैं, हम्म, तो अगर मान लिया कि मेरा एकोस्टिक अगर वहां पे लग रहा है, तो हम्म। क्या उसमें एकोस्टिक के अंदर हम डाल सकते हैं इस तरह से ब्रांच, या एकोस्टिक के बाद डालेंगे? एकॉस्टिक आता है फर्स्ट डिफ्यूजर तक आता है कभी भी, फर्स्ट डिफ्यूजर। फर्स्ट डिफ्यूजर कहाँ है उधर तक हमें एकॉस्टिक डालता है। अच्छा ठीक। ओके, yes, make a note sir, every formula is important for drafting purpose. ये सर एल्बो जो आप ले रहे हैं यहाँ पे, उसमें मिनिमम 6 इंच दिखा रहे हैं, वो क्या है सर R1 एल्बो में? का रेडियस, इनर रेडियस होता है ना, अच्छा, इनर रेडियस हमेशा 6 इंच ही रहेगा? से 6 इंच ही होना है, मिनिमम होना है, मिनिमम? अच्छा, मैक्सिमम भी हो सकता है? मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो R1 और R2 जो हम लेंथ लेते हैं, मान लीजिए अगर हमको मेजरमेंट करना है। शायद योर वॉइस इज नॉट क्लियर शायद। एक मिनट सर, एक मिनट वाईफाई कनेक्ट करता हूँ सर। टेल मी नाउ। सर, जब हम लोग एल्बो का मेजरमेंट लेते हैं, हेलो? बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर, जब एल्बो का मेजरमेंट लेते हैं तो विथ हाइट तो दोनों सेम रहता है, बट इसको लेकर के डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, वो तो सही है ना फिर कैलकुलेशन? डिवाइड बाई टू ऐसा भी करता है, विथ डिवाइड बाई टू करता है, दोनों। एक एक प्लेस में एक एक तरीका से चलता है।
ओके। अच्छा बट हमें हमें आपको फॉर्म समवन विल गो विथ व्हाट थंब रूल्स। अच्छा। मेन डक्ट में रेड्यूसर आ गए तो 18 इंच ले लो, ब्रांच डक्ट में 12 इंच ले लो। ओके, that you will get adapted from your company. But अच्छा my intention is I have given with respect to the uh, what I can say, the standards of the SMACNA. अच्छा अच्छा ओके, डक्टिंग में ऐसा होता है हर कंपनी का वो खुद रूल्स चलता ही रहेगा। थंब रूल चलता है कुछ कुछ प्लेसेस में, ऐसा होता है। बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ इन द स्मैकना स्टैंडर्ड बुक। अच्छा। ये सर R1 R डबल डैश में जो आप ले रहे हैं, हाँ, वो किसका एरो आप शो कर रहे हैं? वो जो लॉन्ग लेंथ है उसका शो कर रहे हैं? ये है R1 आर हाँ। डैश, छोटा वो एरो, बड़ा छोटा एरो एरो। आर डबल डैश। अच्छा। अच्छा सर, यहाँ पे जो ऊपर में आप दिखा रहे हैं वो ट्राउजर, वो थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा सर, वो हमको कंफ्यूजन बहुत रहता लिख है लो, वहाँ पे। फर्स्ट लिख लो, मैं करता हूँ फिर से एक बार। ठीक है सर।
Done. Done, sir. Okay. So do anyone have AutoCAD in your laptops? No, sir. किसी के पास नहीं है AutoCAD? मेरे पास है सर, दूसरे लैपटॉप में है। अभी नहीं सर, कंपनी पे है। और किसी और के पास? किसी और के पास है? Anyone have AutoCAD?
No one have. Oh, he asked this one. See here. क्या पूछ रहे हैं सर? This is trouser. In the trouser, shape will be like this. So this is D1, D2, and this curve, small curve is R1, R2, bigger one, and this is LR1 and this is LR2. So हमें D1, D2 का values find out करना है. So D1, D2 का values find out करना है तो हमको फर्स्ट एक इमेजिनरी x वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W3. Okay, W1 divided by W2 plus W3. That is called X. Therefore, D1 equals to X into W2. Okay, D1 equals to X into W2. So that you will get the D1 value. D2 value equals to X into W3. So that you will get D2 value. When you measure or compare D1 plus D2, that always should equals to W1. D1 plus D2, that always equals to W1. Okay. Next LR1. R1 first. R1 equals to D1 by 2. D1 कितना divide by 2. वो भी minimum 6 inch होना. R2 equals to D1 plus R1. Same like that. LR1 equals to D1 minus W2 divided by 2 into 5. Next, LR2 equals to D2 minus W3 divided by 2 into 5. So this is how you need to find out. Clear? Do anyone, sir, I need AutoCAD. No one having AutoCAD at present? नहीं सर, अभी तो नहीं है, बट वो सब्सक्रिप्शन फेल है सर. कल तक मिल जाएगा, कल शाम तक. कल तो मिल जाएगा साहब. Naresh, can you arrange by tomorrow evening? Yes sir, tomorrow I will arrange sir. Okay. So with arranging, you also install the AnyDesk into that. Okay sir. Why? Because I don't have access to use AutoCAD in my system. I'll teach the drafting tomorrow in your laptop. Okay sir. Okay. So and everyone come with AutoCAD installed in your systems. Tomorrow we'll start working on drafting. Clear? Okay. So whatever the drawing we did yesterday, that drawing tomorrow we'll make it. That one is called as a single line drawing. Okay. So tomorrow we'll make it as a double line drawing by using all these formulas. Clear, everyone? Yes sir, clear sir. Okay. Okay then. Thank you. We'll meet tomorrow then.